अभी सही लगा सी Student, please wait for 2 minutes, okay? Okay, till the time sir is starting with the session, please rename yourself with your registered name so that we can record your attendance. So I can see some user named as Zoom user. आप आपको रिनेम कर लीजिए जिस नाम से आपने रजिस्टर किया है, and rest of the students as well. So there is an option that you will get to rename yourself. If you click on your name और the 3 dots जो नाम के बाजू में है, नीले सर अभी ठीक है? यस यस अब काफी बेटर है, आप स्टार्ट करें सर. प्रियांशु, आपको आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर हो रहा है? ध्यान तो नहीं हो रहा है? नहीं अभी बेटर है सर. वीडियो सर स्टार्ट कर सकते हैं? यस यस प्लीज सर, प्लीज सर. थैंक यू. सो जस्ट कंफर्म मी, आप लोगों के साथ पेपर शेयर हो रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर. ओके, विजिबल है आपको, है ना? तो आपको लगे तो बोर्ड की स्क्रीन को आप पिंक कर सकते हो, है ना? तो आपको बड़ा दिखने लगे उससे. So this is the actual paper of 2025 ICSE board. ना तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो जैसे मनीष सर ने बोला, we are not going to attempt all the questions. ठीक है? The purpose of this session is कि आपको actually questions के अंदर questions को कैसे tackle करना है, कैसे attempt करना है ना? और कैसे उसको एक्चुअली, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर्स. ठीक है? तो क्वेश्चंस के अंदर क्या ट्रिकी पार्ट था, कैसे ट्राई किया हम लोगों ने क्वेश्चंस को, क्या कॉन्सेप्ट होंगे उस चैप्टर के अंदर, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली. ठीक है? तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं जीएसटी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ तो जीएसटी के जितने कॉन्सेप्ट हो या इम्पॉर्टेंट और यू कैन से कि जहाँ पर मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की या ट्रिकी पॉइंट्स हैं, we'll discuss that. Okay, so without wasting any time, we'll start with the question number 1. Okay, so if you have any doubt, you can ask in between, and आप बीच में interrupt कर सकते हो मुझे, है ना? So this is the first question, which is from the quadratic equation, है ना? MCQ question. So 3x square plus root 7 of x plus 2 equals to 0. Okay, so if you compare this with the standard form ax square plus bx plus c equals to 0, you get the values of a equals to 3, b equals to root of 7 and c equals to 2. ठीक है? The common mistake जो students करते हैं यहाँ पे, है ना, if instead of given 2 or root 7 plus root 7, if it is given as minus of root 7, है ना, तो be careful कि इसकी याद रखना, with sign you need to take the value of b. So in that case the b value will be minus of root 7. Okay, so this is the common mistake done by the student, है ना. तो फिलहाल तो हमारे यहाँ पर प्लस है, तो no need to take the negative sign.
So they are asking for the nature of roots. So nature of roots के लिए d will should be है ना, d की वैल्यू से आइडेंटिफाई करो तो b square minus 4ac. So we have three cases. b square minus 4ac is greater than 0 है ना, or equal to 0. So this will represent the real roots of the quadratic equation. In that case, there can be two possibilities: greater than 0 or equals to 0. Okay. So here we have real and unequal roots, or you can say distinct roots. Okay. The second equals to 0, real तो मिलेंगे, साथ में क्या हो जाएंगे, and equal roots. So next is if it is less than 0. So this is the case when real root we are not getting the real roots. Unreal you can say, or imaginary roots. Okay, so we need to find the value of d. So in this case, d will be equals to b square root 7 square minus 4 into 3 into 2, which will be root 7 square is 7 minus 24. So this is less than 0. You will get no real roots. The answer will be option D. Okay, option D will be the correct answer. So next is question from the banking. So Mr. Anuj deposit 500 rupees per month for 18 months. Okay, so n value is given as 18 months. So we have p equals to rupees 500. N is given as 18 months. At a certain rate, if he earns 570 as interest, so I value is given as 570 rupees. Okay, so then his matured value, matured amount की बात है, so we have formula, matured amount will be equals to p times of I, p times of n plus I. Okay, so matured value we need to find, so this will be 500 into n value is 18 plus 570. No need to do the calculations, options are like that only, directly will get the answer. Option A is the correct answer. Okay, so in this case अगर मैं बात करूँ इस chapter के अंदर, so 2 to 3 types के questions ही बन रहे. In one type they will ask for p value, है ना, p value unknown रहेगी, and you have all the other values. If I write the formula, m equals to p times of n plus interest, I can write p n plus 1 times r upon 2 into 12 into 100. Okay, so this is the single formula in this whole chapter. Okay, so there can be 3 values which we need to find, either p value, n value and r value, rate of interest. Okay, so these are the 2 simple cases where p and n r you can easily find. Whenever they are asking for n value, number of months, you will generally, in general case, you will get the quadratic equations. Quadratic, you can say polynomial. So you need to do the practice for splitting the middle term. Okay, so थोड़ा सा लेंदी होगा, बाकी तो easily questions हो जाएंगे. Okay, so answer will be first part. Third, so which of the following cannot be the probability of an event? They are saying. So we know the probability of an event is always lies between 0 to 1. Or in the case of percentage, we can say it always lies between 0% to 100%. Okay. So this cannot be, probability cannot be 1. Obviously, we talk about the formula, probability of an event is equals to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Obviously, जो favorable outcomes आएंगे, that will comes from the set of total. So favorable cannot be more than the total. Okay, so probability should be less than 1. So in the first case, they are saying probability is 5/4. It is not possible since this value is more than 1. Clear? Any doubt? So next question, the equation of a line passing through origin and parallel to the line. So we have one equation. Let's say this is the line, or we can say this is the line. The equations of line is 3x plus 4y
plus 7 equals to 0. So we have one more line, that is the required line, which is passing through the origin. Okay, and we need to find the equation of this line. So we know that any line passing through origin is equals to y equals to mx of the form, and there could not be any constant term. This term should not be there. ठीक है, सिंस क्योंकि उसको 0 0 को सेटिस्फाई करना है, तो अगर यहाँ पे मैंने प्लस कुछ भी किया या प्लस सी किया, तो दैट इज नॉट द केस व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. Okay, so I think by seeing only you can eliminate the option A and option B. A and B cannot be the answer, so we need to check for the option C and option D. Okay, so as these lines are parallel, so we know that if lines are parallel, obviously बात है उनका inclination क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. So we can say their slopes are same, है ना. If lines are perpendicular, the multiplication of slopes would be equals to -1. Okay, so this is not our case. We are saying lines are parallel. So parallel of how we get the slope of this line, है ना. तो हमारे पास standard form y equals to mx plus c. If we convert our equation in this form, we can compare the coefficient of n x will represent the slope. So y की value निकालेंगे, so I can see कि 4y will be equals to -3x -7, है ना. We need only y, so y will be equals to separate divide करूँ तो -3/4x -7/2. So when you compare this with y equals to mx plus c, you will get the value of slope as -3/4. ठीक है, कई बच्चे याद करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस अपॉन, है ना. नो नीड टू बाय हार्ट दैट थिंग. You just compare this with y equals to mx plus c. You can easily get the answer. So we have slope of this line, है ना. इसका slope भी मिल गया. Both slopes are same. So this will be -3/4. Got it? Okay. So now equation will put this value y will be equals to -3/4x. So cross multiply 4y equals to -3x. You get answer as 4y plus 3x equals to 0. Okay, so option D will be the correct one. Got it? If you have any doubt, you can ask in between. So option D is the correct one. So इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करूं, तो the combined question is asked from two chapters. एक ही क्वेश्चन आएगा. इन जनरल अगर मैं पैटर्न की बात करूं, चेंज होता तो बात अलग है. तो जो अभी तक आया हो, अगर देखेंगे प्रीवियस 3 to 4 years के पेपर कोविड के बाद से, सो जनरली दैट सेक्शन इन मिड पॉइंट फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दे विल कंबाइन दी बोथ द कॉन्सेप्ट, बोथ द चैप्टर्स, एंड उससे एक क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो जैसे तो एमसीक्यू है, लेकिन अगर आप देखेंगे आगे जाके तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में lengthy questions में, long answers question में, you will generally get the combined questions from this chapter. Okay, ठीक है. तो you need to prepare both the chapters. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप section math point formula छोड़ दोगे और ये हो जाएगा, नहीं, है ना. Try के दोनों chapter को एक साथ करो. Okay, next question is this was most important or not most scoring chapter from your 10th ICSE board syllabus. ये मान के चलो इसके मार्क्स फ्री, जस्ट मल्टीप्लिकेशन. इफ यू आर मास्टर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो क्या होगा, हमारे पास इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. सो इट इज गिवन दैट a, so a square will be equals to a into a. So 0 1 1 0 multiplied with 0 1 1 0. ठीक है. So कुछ क्विक रिवीजन करेंगे. You can see कि मेरे पास M मैट्रिक्स है और you can see A मैट्रिक्स and B मैट्रिक्स. We are multiplying this matrix and the order of matrix A is M cross N and the matrix B is P cross Q, है ना. So multiplication is only possible when the number of columns of matrix A is equals to number of rows in B matrix. This is the condition for a multiplication of two matrices. ठीक है. If we say let's say this is possible, then we will get a resultant matrix as C. So ये जो बाहर का element means number of rows in first and number of columns in second. So that will represent the order of the resultant matrix. Okay. So if I am saying कि A into B अगर exist करता है, तो it doesn't guarantee कि B into A भी
एग्जिस्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। क्लियर? ठीक है। तो एक सजेशन क्या है, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो तो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर आप लिख लिया करो कि कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए। इन दिस केस तो इजीली है 2 into 2 का मैट्रिक्स, तो ऑब्वियस है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 2 into 2 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। दैट मीन वी आर गेटिंग द 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। ओके, सी द मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो वी आर टेकिंग द फर्स्ट रो, है ना? तो फर्स्ट रो, इसके बाद दो कॉलम, तो इसका हमेशा वी आर फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स विल ऑलवेज टेक द रोज एंड फ्रॉम द सेकंड मैट्रिक्स ऑलवेज टेक द कॉलम्स। सो लाइक दिस, है ना? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड को सेकंड से, सो सी 0 into 0 0, 1 into 1 will be 1. Now फर्स्ट रो, क्योंकि रो हम सेम रख रहे हैं, है ना? कॉलम इसके आएंगे, तो 0 into 1 and 1 into 0, you will get the answer as 0. Addition करना है, not the subtraction. Same now comes to, ये मैंने बताया इसके रोज आपको डिफाइन करेंगे अपने रिजल्टेंट के रोज को। सेकंड रो में मैंने जंप किया, now we'll see the first column, second and 1, तो 1 into 0 0, 0 into 0 is also 0. ठीक है। सेकंड, नाउ सेकंड कॉलम, इसका अगर मैं बात करूं नंबरिंग की, तो दिस इज द एलिमेंट फ्रॉम सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 2, तो इसका सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 into 1 is 1 plus 0 is 1. Okay, so this is the correct answer. So option C is the correct answer. Yes, Tika, you can ask a question. Yes, sir. I had seen a question where it was the order of A was 2 into 1 and order of B was 1 into 2. Okay, 2 into 1 and B is 1 into 2. Yes, so how will you multiply that? Okay, see, first पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, इसका देखो कॉलम, इसके रो करेक्ट है। ओके, ठीक है। सो रिजल्टेंट विल बी 2 into 2. Yes. Okay, okay, ये हो गया ना। I'll take one example. So the answer should be a matrix of 2 into 2. I'll take one example. So 2 into 1 means 2 rows and 1 column. So I can write 2 1. Is it? Yeah. So this is your 2 into 1. And here we have 1 row. Okay, let's say 3 and minus 2. So this is your 1 into 2. तो मैंने बोला कि 4 कॉलम आएंगे 2 into 2 के, तो 4 हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। सी बेसिक है, मैंने क्या बोला आपको, क्या लेना है, ये रूल ले रहे हैं, है ना? इसके रोज लेने और इसके कॉलम्स लेने और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना। ठीक है। अब आप इसका अगर रो ले रहे हो तो केवल 2 एलिमेंट है, इसका कॉलम लोगे तो 3 एलिमेंट, तो इनटू 2 into 3 6 ही आने वाला है ना केवल। ओके, नाउ अगेन मैंने बोला कि इसी के रो की लिखेंगे, तो अगर इसका फर्स्ट रो ले रहा हूं तो इसका क्या सेकंड कॉलम आएगा, तो 2 into -2 -4 आ जाएगा। क्लियर? नाउ सेम फर्स्ट क्लियर, 1 into 3 is 3 एंड सेकंड कॉलम लेंगे तो -2 आएगा। ठीक है। अगर बाय द वे आपको प्रॉब्लम आती है कि नहीं सर मुझे इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो बेसिक में चले जाएगा। यू नो कि आंसर तो मुझे पता है कि 4 into 4 का मैट्रिक्स आता है, सॉरी 2 into 2 का। नाउ 4 एलिमेंट्स को नेमिंग करते हैं, है ना? अगर ए मैट्रिक्स तो ए ए ए ए, जिसका नेमिंग अगर आपको पता होगा तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है तो 1 1 आएगा, है ना? इसका क्या आएगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड सेकंड आएगा। ठीक है। तो याद रखो ये जो नंबर, ये कॉलम है, रो को रिप्रेजेंट करे, कॉलम को रिप्रेजेंट करे। ओके, सो जब रो को ले रहा हूं तो रो किसकी लेना है मुझे, फर्स्ट वाले इसकी लेना है, और कॉलम मुझे किसका लेना है, सेकंड का, और करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट और फर्स्ट लिया तो एक ही एक एलिमेंट है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेकंड में इसका फर्स्ट ही लेना है रो, और इसका कॉलम कौन सा लेना है, सेकंड लेना है, 2 into 2 -4 हो गया। सेम फॉर दिस, ये बेसिक है एक्चुअली, है ना? अगर आपको डाउट होता है तो इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेकंड रो ऑफ दिस एंड फर्स्ट कॉलम दिस, तो 2 into 3 सॉरी 1 into 3 is 3, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम -2 हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो तो पहले मैंने वही सजेस्ट किया आपको, क्या करो आप पहले रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो कि आपको कितने एलिमेंट्स आएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि किसको कहाँ लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे 4 एलिमेंट मिलने वाले हैं, श्योर था मैं, तो मैंने डायरेक्टली उस बेसिस पर वर्क किया, और बेसिक से अगर कभी डाउट है तो बेसिक से कर सकते। क्लियर? ओके, वेलकम। Next we have 6 questions, है ना? This question is from circle chapter. Okay, one tip for all of you. अगर आप पूरे सिलेबस के अंदर जाओगे, जैसे मैंने रिकरिंग बैंकिंग की बात की, तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया कि बैंकिंग के अंदर देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कहीं पे भी। either they can ask for P, either they can ask for N, or they can ask for R, और इजी वे में डायरेक्टली पूछ लेगा कि मैच्योर्ड वैल्यू बताओ। लेकिन अगर मैं पूरे चैप्टर में बात करूं तो बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली बेस्ड हैं। अगर क्वाड्रेटिक की बात करो तो दे हैव नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करेंगे, है ना? लेकिन अगर मैं जब बात करता हूँ किन 3 चैप्टर या 4 चैप्टर्स की, वन इज ट्रिग्नोमेट्री, आई होप सबको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती होगी, सेकंड इज सिमिलैरिटी, थर्ड इज सर्कल, और अगर फोर्थ में बात करूं तो टेंजेंट का थोड़ा सा पार्ट। तो ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जिसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आई होप सबको होती होगी, ठीक है? तो उसका एक्चुअली वो चैप्टर, तो आपकी उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है कि वो चैप्टर्स नहीं आ रहे, वो चैप्टर्स ही ऐसे, दे रिक्वायर्ड मल्टीपल प्रैक्टिसेस, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर के अंदर उतना उसमें कॉन्फिडेंस आने वाला है ना? तो ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार कर लिया तो हो गया। तो मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं बात करूं, सर्किल की बात करूं, सिमिलैरिटी की बात करूं, टेंजेंट, तो मल्टीपल टाइम्स में एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको सेलिना है, वो जो भी बुक कर रहे हो वो बुक आपको करनी पड़ेगी, है ना? और रिवीजन के टाइम पे नो नीड टू राइट, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम और कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करें, दैट इज सफिशिएंट कि आंसर आ जाए। रिवीजन इज इजी फॉर 2 चैप्टर्स, ठीक है? तो उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, वैसे नहीं क्वाड्रेटिक एक बार हो जाएगा तो हो जाएगा वहां पर, ठीक है? बाकी मैं सजेशंस दूंगा जहां पे मुझे लगेगा आपको। ओके, सो आई ड्रॉ द डायग्राम। So this is the secant. This angle is given as 120 degree. BC is equals to AC. And this is E. तो हमारे पास क्या लिमिटेड कॉन्सेप्ट है सर्किल के अंदर, है ना? साइकिल क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, हाफ एंगल की बात करेंगे, एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री बात करेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना? तो ये 3 to 5 ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। लास्ट में अगर जाएंगे टेंजेंट में जाएंगे तो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज कुछ आएंगी और उसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आती है। तो आपको सर्किल में क्या करना है, चारों 5 जो थ्योरम्स है सब एक साथ अप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर इजी, है ना? तो दे आर सेइंग कि 120 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में आंसर, तो AEC की वैल्यू दे आर आस्किंग फॉर, है ना? अब जैसे AEC पूछा मुझे तुरंत स्ट्राइक किया कि ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर था ना, ABC, है ना? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की मुझे प्रॉपर्टी पता है क्या है, कोई बताएगा? साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? इफ आई एम गेटिंग दिस एज 30 डिग्री so this should be 150 degree. Opposite angles are supplementary angles. तो ये अगर मुझे फाइंड करना है तो इनडायरेक्टली आई कैन से यू नीड टू फाइंड दिस एंगल। अगर ये मिल गया तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी लगा के यू विल गेट द आंसर बाय सब्ट्रैक्टिंग दैट वैल्यू फ्रॉम द 180 degree. Okay, so see now if this is 120 degree तो I can say this will be 60 degree, है ना? 60 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। Okay, so if this is, these two sides are equal, this is theta, so this also theta, isosceles triangles. Now I can apply the angle sum property of triangle, so theta plus theta, 2 theta plus 60 equals to 180 degree, है ना? So you get 2 theta equals to 120 degree, तो theta is equals to 60 degree आ गया, तो ये भी 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया 60 डिग्री का। Now see if this is 60 डिग्री, है ना? इसको मैं हटाता हूँ, क्या जरूरत नहीं है,
and this is a cyclic quadrilateral, so this should be 180 minus 60, which is equals to 120 degree. Option D is the correct answer. Got it? Any doubt? So after the session, okay, we'll share this PDF also with you. बस आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, नहीं तो we'll share this PDF with you. Okay. So next, question number 7 from the factors and remainder theorem. Again, this scoring topic. और MCQ के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्व करना जरूरी है ना, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली आंसर्स लिखने हैं, तो थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क करोगे सेव योर टाइम, है ना. जैसे ये क्वेश्चन था, नो नीड टू डू एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन. अगर मैं बात करूं तो बाय सीइंग ओनली यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन. तो दीज आर टू पॉलिनोमियल्स, है ना. They are saying the factor common to the two polynomials. अब देखो ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे ना, x plus 1, x minus 1, x minus 2, and they are saying x minus 4. ठीक है, तो ऑप्शन से ऐसे देख के रखे थे, they are not, they don't want कि आप सॉल्व करने बैठोगे. अब बच्चों ने क्या किया था, इसके फैक्टर तो मैं कैन इजीली से, this is nothing but x square minus 2 square, so that will be a square minus b square, a plus b and a minus b. Now what they said, they did, इसको भी फैक्टर करने बैठे, पहले रैंडम किया, एक फैक्टर निकाला, फिर डिवीजन किया, लॉन्ग डिवीजन, फिर उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो 3 फैक्टर मिले. नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा था. एनीहाउ मुझे पता है कि अगर इसके कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके तो 2 ही फैक्टर है ना, तो आंसर शुड बी ईदर x plus 2 और x minus 2, क्योंकि इसके अंदर ये आएंगे तभी तो कॉमन होगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ऐसा तो नहीं, 1 तो लिखा नहीं कि कॉमन फैक्टर बने. So answer should be either x plus 2 or x minus 2. See, only one option is there. X plus 2 है ही नहीं ऑप्शन के अंदर. So this cannot be the answer. This cannot be the answer. This cannot be the answer. X minus 2 is the answer. कुछ सॉल्व नहीं कर रहा. तो क्वेश्चंस मोस्टली काफी क्वेश्चंस ऐसे देखे, you can directly solve, directly get the answer. Are you getting? है ना? तो no need to solve this question. By seeing only you can guess the answer. हाँ, अगर बाद में अगर एक ऑप्शन और ही होता, let's say there are x plus 2 also, so then you need to put the value of x equals to 2 and x equals to minus 2, so remainder theorem se we can get the value. Got it? Okay. Next, ये अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों के काफी कंफ्यूजन हुआ 8th क्वेश्चन के अंदर. What I suggest in this chapter, if we talk about the sales and dividend, no need to by heart any formula. By common sense, you can easily get the answers. Okay, so in man invest in a company paying, तो याद रखना dividend is always calculated on the nominal value. जो बच्चे जनरल मिस्टेक्स करते हैं वो dividend निकालेंगे. ठीक है, keep in mind क्या हमेशा क्या करना है हमें, dividend is always calculated on the nominal value. So they are saying a man invested in a company paying 12% as dividend. So D is given as 12% on its share. Okay. तो अगर मैं बात करूं तो dividend की बात करूं तो income की बात करें तो income means dividend, same thing. Profit you can directly say. So income is nothing but nominal value का कितना होगा 12%. So this is the income. Okay, let's say now he is invested in that share, तो market value पे उसने purchase किया, तो this is the investment. We are comparing for the one share only. So this is the market value. इस पे हमने investment किया. Let's say 100 rupees का share purchase किया, sorry 100 rupees का share purchase किया 120 rupees. तो investment is 122. तो market value is nothing but the investment for one share. तो market value. They are saying if the percentage return on his investment is 10%, so means percentage return means on investment. Investment is market value. So this is given as market value for 10% if we calculate. So this is our profit or income. So this is also profit, income. So they are saying कि share बताओ at par है, nominal value equals to market value है या market value से ज्यादा है या कम, और cannot be determined की बात हो रही है.
So in both the cases ये हमने इनकम निकाली with respect to nominal value dividend के according, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज था उसके अकॉर्डिंग. So both values should be same. तो NB upon into 12 upon 100 should be equals to MB into 10 by 100. So 100 is cancel out. So if I see ki nominal value upon market value ki, so this will be 10 by 12, which is equals to 5 by 6. So nominal value upon market value is equals to 5 by 6. Ratio मिला 5:6. तो यहाँ से obvious सी बात है, nominal value अगर मैं 5 रुपए ले रहा हूँ तो market value क्या है 6 रुपए. So market value is 6 rupees. That means share is at their premium. That means above par will be the correct answer. Got it? So option C is the correct answer. Share is at par. Got it? Any doubt? तो जो क्वेश्चन है वो बोला था मैंने दोनों वे से इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट निकाल लिया. यहाँ पे मैंने डिविडेंड निकाले. डिविडेंड इज नथिंग बट दी प्रॉफिट ओनली. तो वहां से मेरी कैलकुलेशन इजी हो गई. ठीक है, क्लियर. याद रखना एक चीज और है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं या कुछ परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू कि आप 1 शेयर के लिए निकालो या 10 शेयर के लिए निकालो, सेम थिंग आएगा वहां पे. ठीक है, क्योंकि परसेंटेज की बात. हाँ, इनकम पूछेगा तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय द शेयर. तो यहाँ पे तो कुछ मतलब ही नहीं, आंसर मल्टीप्लाई भी करोगे नंबर ऑफ शेयर्स तो कैंसिल होने वाले हैं. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस. So the point which is equidistant from 3 non-collinear points D, E, F is circumcenter of the circle. ठीक है, तो circumcenter पहले आपको पता होना चाहिए क्या होगा. एक ऐसा सेंटर सर्कल which is passing through the vertex of all 3 vertex of a triangle. So that is called as circumcenter, circumcircle, and the center of circle is circumcenter. सेंटर होगा सर्कमसेंटर. तो ऑब्वियस ही होता है अगर ये वर्टेक्स से पास हो रहा है तो इसके बीच की जो डिस्टेंसेस होगी वो सेम होगी, वो रेडियस पे होगी, है ना. तो दे आर सेइंग कि द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. तो ये पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इज द सर्कमसेंटर. करेक्ट? ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज. अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये सर्कमसेंटर फाइंड कैसे करते हैं, है ना. सो दिस इज नथिंग बट दी, अगर मैं बात करूं दिस इज नथिंग बट दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किसमें, लोसाई और कंस्ट्रक्शन के अंदर. क्लियर? सो अगर मैं बात करूं साइड्स का, याद रखना यार वर्टेक्स हम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. ऐसा अगर कुछ कल को डायग्राम हो तो दिस इज नॉट आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से पास होगा. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई गारंटी नहीं है कि इट विल पास थ्रू द वर्टेक्स और नॉट. सेम चीज यहां पे भी करेंगे, इस साइड का भी, है ना. तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा. क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू इन सेंटर. इन सेंटर में क्या होगा, जो एंगल्स होंगे उनका बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे. एनी 2 एंगल्स का बाइसेक्टर जहां पे कट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर. Okay, so they are saying the incenter of triangle is the point where the bisector of the angle intersect. So correct is. So both these statements are correct. ठीक है, so option A is the correct answer. Both these statements are true. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट, अगर आप इस साल के सैंपल पेपर की बात करो 2026 का जो ICSE ने रिलीज किया, so they eliminated, removed the statement questions, है ना. लास्ट ईयर देखोगे तो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आता था, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता था. नाउ दे रिप्लेस द स्टेटमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द असर्शन रीजन, जैसे CBSE में आता है. ठीक है, तो अगर सैंपल पेपर में दिया तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस ही आएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, है ना. ये अच्छा क्वेश्चन था. मे बी आई थिंक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा. हमारे जो वॉल्यूम्स रहते हैं, बुक्स रहते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर भी, एंड वी प्रैक्टिस्ड दैट क्वेश्चन. सो असर्शन की बात करें, दे आर गिविंग कि sin squared a plus sin a value is given as 1, and they are saying if this is possible, है ना, 1, then we need to prove that cos square a plus cos square a की power 4 plus cos square a की वैल्यू 1 होगी. They are saying, है ना. So we need to check whether it is correct or not. Okay, see.
So we can take this term here. So I can say sin A will be equals to 1 minus sin square A. Okay. So sin A, can I write sin A? First identity आप लोगों ने पढ़ा है sin square theta plus cos square theta equals to 1. So 1 minus sin square theta I can write it as cos square A हो जाएगा. Is it? Any doubt? Okay. Now इसका देखते हैं. अगर मैं बात करूं cos power 4, I can write cos square A की power 2 plus square as it is रखता हूं. Now cos square A, can I replace cos square A with sin A? So this will become sin A whole square. Again cos square A I can write sin A. So this will become sin square A plus sin A. And but this is given as 1, already given in question 1. So this is 1. So जो स्टेटमेंट में फर्स्ट है असर्शन दैट इज करेक्ट. cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर cos स्क्वायर A दैट शुड आल्सो बी 1. क्लियर. और इसके लिए देखो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या यूज किया है, ये आइडेंटिटी यूज की कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगी. सो असर्शन इज रीजन इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ओके. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बोथ A and R are true and R is the not D, C. Both A and R are true and R is the correct reason for A. Clear? अच्छा एक सजेशन आप लोगों को देता हूं. ये जो ऑप्शंस के सीक्वेंस है ना, मे बी ऑप्शंस के सीक्वेंस दे कैन चेंज, है ना. तो आपको क्या करना है, थोड़ा अटेंटिव रहना है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, ऑप्शंस को भी 1 by 1 रीड करना है क्योंकि इनका सीक्वेंस वो कई बार चेंज करते हैं. ठीक है. गॉट इट. तो मे बी ऐसा हो सकता है जो सीओडी ऑप्शंस अभी आपको दिख रहे हैं एक्चुअल पेपर में वो ए और बी में भी रिप्लेस हो सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द वन. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन फ्रॉम द सिमिलैरिटी. ओके. सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इज गिवन. An angle ABC equals to angle EFG. तो if I say कि यहाँ पर ट्रायंगल देकर रखा है ABC is similar with triangle EFG. तो without seeing anything, है ना, can I write, अगर मैं सिमिलर किया है तो इनके साइड्स का रेशियो, अगर मैं डायग्राम नहीं देखूं तो इसमें देखते हैं कुछ वैल्यूज गिवन है क्या, इसके अकॉर्डिंग कैन गेट द आंसर्स. इक्वल्स टू AC अपॉन EG होगा ना. AB लिया तो FG है. सीक्वेंसेस मैटर, बहुत मैटर करता है आपका. अगर आपने ट्रायंगल्स के नेम कर लिए तो क्वेश्चन खत्म होता है. तो AB इज गिवन एज 15, EF इज गिवन एज 75, है ना. हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, FG चाहिए. तो FG यहीं पे आ रहा है. तो BC इज गिवन एज 3, FG. ठीक है. तो यहीं से आ जाएगा आंसर. तो FG इज नथिंग बट योर 15 सेंटीमीटर. ठीक है. तो नो नीड टू फॉलो द आंसर्स ऑफ डायग्राम, डायरेक्टली वैल्यूज देख लो, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन. क्लियर. ओके. तो डायग्राम बड़ा है, कोऑर्डिनेटर देख के रखा है, डोंट कंफ्यूज. तो आपको कंफ्यूज करेंगे. एंगल्स भी देख के रखा है, नहीं भी देते तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर. ओके. नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ, तो इस चैप्टर के अंदर मैं बात करूं सिलेंडर कोन के अंदर, तो फॉर्मूला मस्ट, है ना. इसमें एक टिप देता हूं. So whenever we are removing some part from the solid, if I say कि मैंने क्या किया, सिलेंडर से एक कोन निकाल लिया यहाँ पर सॉलिड से, है ना. तो बच्चे क्या करते हैं, जब वॉल्यूम, तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम कम हो जाएगा मटेरियल का, लेकिन whenever we are talking about the surface area, तो क्योंकि बच्चे का तो मोस्ट अभी 90% मैंने स्टूडेंट्स को देखा वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना. मोस्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वॉल्यूम को फॉलो करते नहीं. वॉल्यूम में बेटा वॉल्यूम कम हो गया ना, कैपेसिटी कम हो गई उसकी, मटेरियल कम लग रहा है, तो ऑब्वियस से बात है वॉल्यूम कम होगा. लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, सिंस क्या होगा, यहाँ पर फ्लैट था, ये पैक था, पूरा का बॉडी, पूरा यहाँ पे जो मटेरियल था वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी था, मुझे दिख नहीं रहा था, सरफेस में नहीं था. लेकिन अब क्या हुई है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ है, कैविटी क्रिएट हुई है. तो दिस जनरेट अ न्यू सरफेस फॉर दिस सॉलिड. तो सरफेस, जब एक नया सरफेस बन जाएगा तो ऑब्वियस है तो उसका एरिया भी तो आ जाएगा. तो यहाँ पे इसका πRL कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ पे हमारा ऐड होगा. तो दिस इज दी जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते बच्चे, तो याद रखना
कभी भी सरफेस एरिया की बात करो और सरफेस एरिया जनरेट हो रहा है। हाँ ये बात है कि ऑब्वियस ये बात है, जब यहाँ पे फ्लैट सरफेस था विच इज पाई आर स्क्वायर, वो रिमूव हो गया तो वो हट जाएगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से, और यहाँ पे एक सरफेस जनरेट होगा विच इज पाई आर। Got it? So now comes to question. If the volume of two spheres are in the ratio, let's say V1 upon V2 is given as 27/64. The ratio of their radii. तो volume of, अगर मैं बात करूँ sphere के, तो 4/3 pi, let's say small r की बात करें r cube upon 4/3 pi capital R cube, है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएंगे पूरा, तो r cube upon r cube equals to 27/16. If we take the cube root, this will be 3/4 आ जाएगा. 3:4 is the correct answer. Option A is the correct. Clear? आपको कहीं डाउट आता है? You can ask. You are free to ask any time. Don't wait कि सर क्वेश्चन खत्म करेंगे तभी पूछेंगे, है ना? You can ask in between also. Next. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने बहुत मिस्टेक्स करके आए थे. अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो लास्ट ईयर छोटी सी मिस्टेक है लेकिन बहुत वहां एग्जाम में की बच्चों ने. They are saying mark price of an article is 1375. Okay, so MP is given as mark price, क्योंकि डिस्काउंट नहीं है तो यही सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा, which is given as 1375, and CGST is given as 4%. The price of the article including GST हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस प्लस GST की बात करें. ऑप्शंस देखो, है ना, 55B 110, C 1430 एंड D 1485. देखो अभी फिर बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को, ऑब्वियस सी बात, अगर सेलिंग प्राइस 1375 थी, है ना, तो सेलिंग प्राइस से ज्यादा ही होगा ना, प्लस जीएसटी करने पे आएगा ना, इंक्लूडिंग जीएसटी. तो ये 55 और 112 तो किसी सेंस में ही नहीं बनाते ऑप्शंस, कि सेलिंग प्राइस ही 1375 है, जीएसटी करके तो और बड़ा नंबर आएगा ना, तो ये दोनों ऑप्शंस तो किसी भी उसमें थे ही नहीं, है ना. तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ना है, क्वेश्चन ऑप्शंस भी देखने हैं. ऐसा हो सकता है कई बार सॉल्व करने की जरूरत नीड ही नहीं पड़े आपको. नाउ कम्स टू, अब बच्चों ने यहाँ डायरेक्टली 4% लेके सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें ऐड कर देना सीजीएसटी देख रखा है बेटा, जीएसटी दे आर आस्किंग फॉर जीएसटी, सो जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी 448% हो जाएगा, तो 1375, है ना. एमसीक्यू तो मैं क्या डायरेक्टली यूज किया, अगर 100% तो देना पड़ेगा और इसका मुझे 8% और देना पड़ेगा, तो 100 + 8, इसका डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट 108%, सो दैट विल इंक्लूड द सेलिंग प्राइस आल्सो. ठीक है, मैंने क्या किया, 100% तो देना ही पड़ा सेलिंग प्राइस, और उसके एडिशनल मुझे 8% का क्या देना पड़ रहा है, जीएसटी पड़ रहा है. तो मैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दी, मैं इसका 8% निकालूं, फिर ऐड करूं, एंड डायरेक्टली ऐड दी 108%. Got it? Okay. I'm not taking the question number 14, है ना, it's easy. Okay, we'll do the question number 15, है ना. इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार दे रहे हैं वो लोग, है ना, इजी वे में. कुछ नंबर्स दे देंगे, कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे देंगे, उनका मीन की बात करेंगे. सो द मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स इज, तो 9 नेचुरल नंबर्स में 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते 9. ठीक है, इनका मीन की बात करें तो ऑब्वियस है डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, n डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर 9 तक आप कैलकुलेशन कर लो, 1 + 2 + 3 करके, और डिवाइड बाय n कर दो, 9 कर दो, विल गेट द आंसर. और अगर आप पता हो तो ये एपी फॉर्म हो रहे हैं, तो एपी के 9 टर्म्स का सम, है ना, तो n/2, तो 9/2, और यू कैन से n/2 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ a is 1 प्लस n-1, d भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस. तो अगर सॉल्व करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n + 1/2. दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हमें यहां से मिलता है. तो आपको n की वैल्यू 9 पुट करना है, तो 9 × 10/2, है ना, ये आंसर आया. एडिशन का डिवाइड बाय n भी करना है, तो डिवाइड बाय 9 भी कर दोगे, तो यू गेट एज 5 इज द आंसर. दे आर सेइंग कि 4.5 इसका मीन है, तो दैट इज रॉन्ग वन. मीन का फॉर्मूला करेक्ट है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. गॉट इट? ठीक है, तो असर्शन इज रॉन्ग, false, and reason is true. So option B is the correct answer. Okay, so this is all about the MCQs.
अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस में टिप्स दूंगा, आप लोग सॉल्व करना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला तो लगा लेंगे बच्चे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। यू कैन यूज दी टेबल, जो आपको टेबल मिलेगी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, मैथमेटिकल टेबल, उसका यूज करके रूट की वैल्यू भी निकालोगे जी। अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, ये समझ में नहीं आता कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस में डिफरेंस क्या है। तो छोटा सा डिस्कशन इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कैलकुलेशंस हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। तो जो मिस्टेक्स होती हैं यहीं पे होती है। लेट्स से आंसर आई गेट एज 2.5673 and second is 0.3245, है ना। In this question, let's say if I get these two values as the roots, but they are saying कि round off to 3 significant figures, है ना। तो significant figures में क्या होगा, आपको पॉइंट्स के पहले भी जो डिजिट्स होंगे उनको काउंट करेंगे, but they should be significant। तो अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस यहाँ पे significant है, तो 1 2 3 यहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है, तो इट विल बी 2.5, लेकिन 6 के जस्ट बाद में 5 से या 5 से बड़ा नंबर है, तो विल गेट एज 2.57। So this is the answer for 3 significant figures. If they ask for 3 significant digits की बात, sorry, decimal places तक करना है 3, तो 3 तक करना पड़ेगा, तो विल गेट आंसर इज 2.567। ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस में आपको क्या करना है, ये काउंट नहीं करना है पॉइंट्स के अंदर वाला वैल्यू, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट करना है। अब इसमें बात करते हैं, आप कंफ्यूजन में नहीं आता होता कि सर आपने बोला था कि पॉइंट्स के अंदर काउंट करना है, तो मैंने ये भी तो बोला था सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। इसका अगर मैं इसकी जगह 2 0 3 0 लगाऊं, कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है। सो विल काउंट फ्रॉम हियर, तो 1 2 3, तो आंसर भी 0.342 और 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेसिमल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। क्लियर? ओके। 5 मिनट और करेंगे। श्योर बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड। This question is from the banking, again the same question. It is given that P value is given as 250 and a period of 3 months, so n will be equals to 3 into 12, which is equals to 36 months. So C received, the matured value is given as 10110 rupees. So they are asking for rate of interest. That means we need to find the value of R. So just put the formula. So formula is MV is equals to PN plus PN n plus 1 times R upon 2 into 12 into 100. Okay. So MV value is given as 10110. P is given as 250. N is given as 36. Again 250 into 36 into 37. R we need to find 2 into 12 into 100. Just simple calculation, है ना। Don't take the LCM, इसको यहाँ पे ले जाओ and subtract this from the 10,110. Okay, so you'll get the value of R. In the second part, they are saying how much more interest Mrs. Rao will receive if she had deposit 50 more per month at the same rate of interest. So we get the value of R instead of 250. Now we put the 300 rupees, है ना, और जो आंसर आएगा interest, है ना, we need to find the MV. They are asking for the interest difference in the interest. So we'll get the value of interest, है ना, previous and new one, and get the answers. Okay, clear? So we'll take a break. Manisha will join. So, dear students, I hope ये stop share करूँ सर? हाँ. And can we make this कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, wait for
So I guess I am visible centrally on your screen, Priyanshu. Okay. So we are making some small announcements now, and then sir will continue. I hope you are finding value in what we are doing today. Remember, it is not about solving the entire paper today, but small tips, tricks, understanding the questions, छोटे-छोटे nuances. These are very, very important things with respect to 10th ICSE exam. While you're solving a problem and whatever sir is trying to tell you, they should become part of your learning. It's not about only getting the right answer or you knowing the question or not knowing. It's also understanding the approach. तो वो सब आप करते चलो so that you improve your board exam score. Now, 3 very important things. Number 1, for this session that you are attending today, you guys also have an opportunity of writing one full portion 10th ICSE maths paper. So full portion maths ICSE का paper आप लिख सकते हो. You can write that paper as a real exam with us. It will be free of cost because you are attending this session today. You can do that, and for doing that, you will have to fill a feedback come demo registration. Demo मतलब वो एक paper जो आप लेना चाहते हो. You get that free. You'll have to fill a form, and link of that form should be available in your chat box now. My team has put that link in the chat box. You can register for free one full portion mock test, which you write. You will get the corrected copy. My team will correct it. My academic team will correct it. You will know your marks. Where have you gone wrong? और उसका model solution. आपको ये सब मिलेगा. After that, if you want to enroll into UT's 4 full-length mock test for mathematics, or let's say science or social studies, geography, history, civics, English 1, English 2, आप सारे subjects के लिए हमारे साथ enroll कर सकते हैं. You will also get a discount code, which you can enroll online, and you get a discount code where you can write test at your home, upload the copies. Faculty will check here and give you feedback. You will get the entire model answer. So ये सारा support आपको मिलेगा. If you want to do that, you can also purchase it. You get a discount code. Plus, you can register for one free mock test. So these are few things that you must do. These are excellent methods for preparing for board exam. I'm not giving you any gyan, but quickly बता दूं. Right now, you have already done your chapters in school and at tuitions. What you need is more of problem solving. ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना. तो उसके लिए these mock test of UT acts as very good practice material because you are writing your board exam 4 times before the real board exam. Maths का 4 बार full portion, physics, chemistry, biology 4 times, economics, commercial application, English 1, English 2, सबके 4 full portion test आपको मिलेंगे, and before board exam you can write them, get feedback, get corrected copy, have model answer and improve yourself. So in case आपको वो service लेनी है, of course it is a paid service, but you get a discount code for that. आपको एक बार एक test लिख के देखना है, you can do that. You register through this form. ये link अभी भर दो so that you don't miss it, because जैसे ही session खत्म होगा, the discount code or the link they will vanish. So you can fill it in the break, and you can take the full benefit of whatever we are offering. We have been in this business for 26 years now, तो आप उसका पूरा फायदा ले सकते हैं. So let me give you 2 minutes का water break, and after 2 minutes, Uday sir will come back and he'll resume with the paper solving. नीलेश सर, मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज ऐड करिएगा. नहीं सर. सो ये लिंक आप फिलअप करोगे तो आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्लस और भी ऐसे सेशंस आगे आने वाले दिनों में हम प्लान करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड. सो प्लीज फिल द फॉर्म शेयर विद यू. Okay, student. Okay. So we are continuing with the paper. नहीं सर, बस 1 मिनट रुक जाते हैं. आई थिंक कुछ बच्चे अभी फॉर्म Okay.
Yes, last few seconds and Uday sir will start the session. तो अगर आप अभी फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हो तो ये लिंक आप कॉपी करके आपके पास रख दीजिए so that you can fill up this form later as well. Uday sir, I think आप start कर लीजिए. Yes, thanks. Okay, so from the second question, third part. So this is all about the question is from the similarity. So I'll give you the approach how we attempt the question. So question number 3, make the diagram. So two right angle triangles are there. This is 90 degree and A, and this is 20 centimeter. This is given as 25 centimeter. One perpendicular is drawn from point D. This is also 90 degree, and this length is given as 3 centimeter. Okay. And this point is C. So this question is for the 4 marks. So in triangle ABC, angle ABC is 90 degree, AB is given as 20 centimeter, AC is given as 25 centimeter, and DE is perpendicular to AC. Okay, so angle DE is 90 degree. So DE length is given 3 centimeter. So we need to prove that triangle ABC is similar with triangle AD. Okay, so abhi easy ho gaya because they have already written the name of the triangles. Okay, so they are saying ki triangle ABC, the bigger one, and triangle ADE. Okay, so how to approach the questions? So see, if whenever one triangle is formed inside a triangle, so make sure one angle should be same. Okay, will be same. Okay, क्योंकि this angle A is the common angle, तो दोनों में common angle होगा तो एक angle ये मिल गया and one is 90-90. So you can easily say that these triangles are similar with the criteria of angle. Since this angle AB is corresponding to angle E, yes, B is 90, E is 90, and then A is common angle. So we can say both the triangles are similar triangle with the criteria A. Next, they are saying find some 3 sides. If they are similar triangles, so we can say the ratio of the sides are equal. AB upon AE is equals to BC upon ED. That is also equals to AC upon ED. Okay, so AB is given as 20. AE we don't have AE value. Then BC is given as BC we can get the value BC by applying the Pythagoras theorem in triangle ABC. So I can say 25 square is equals to 20 square plus BC square. So I'll get 25 square is 625 is equals to 400 plus BC square. So from here you will get BC square as 625 minus the 225. So BC will be equals to 15 centimeter. So this is 15. So 15 upon ED. ED we have 3. That is also equals to AC. AC is 25. AD we need to find. Okay. So this is nothing but a 5. So you can, if you compare this, the 20 upon AE will be equals to 5. So AE you will get as 4 centimeters. Okay. Then if we compare these two, so 5 is equals to 25 by 80. So you will get AD value as 5 centimeter. Okay, so they are asking for BC. BC we will already get 15. AD we have 5 and AE nothing but 4 centimeter. So this is all about the second part. Okay, easy. Third, if BCED, they are asking for BCED. This is a quadrilateral representing a plot of land on a map whose actual area is on the ground. So this actual area is given as 576 meters square.
then the scale factor. So scale factor is nothing but, keep in mind, if we comparing the length, or we can say dimensions of the model, divided by the actual dimensions. Okay? If we are comparing the area, so area means area की बात करेंगे तो we'll take, instead of k, we'll take k square. Okay, so k square is equals to area of model upon area of object. Okay, actual area of object. So we need to find the, and this value is given as 576. So I can say k square will be area of model upon 576. So we need to find the area of this quadrilateral, okay, with the given dimensions. है ना, जो model का आपका dimension दिया उसके according we need to find the area for this. So can I say area of this will be equals to total area, that means area of triangle ABC minus area of this triangle, which is angle triangle AED हो जाएगा. Okay, so I can say area of DBCE will be equals to area of this triangle will be half of base is BC into perpendicular is AB minus half of, इसका बात करेंगे तो this is the base and this is the height, DE into A. So half BC is given as 15, AB is given as 20 minus half D 3 and A, we find A as 4. Okay, so this is 10, this will be your 2, area will become 150 minus 6, this will be 144 centimeter square. So k square will be equals to, k square is nothing but 144 upon 576. Solve this, you will get the value of k. K is the scale factor. Got it? Any doubt? Or if you want, if you don't want to do all these things, you can directly take the ratio of the areas by, if two triangles are similar triangles, the ratio of their areas will be the square of the ratio of the sides. So you can say 25 यहाँ से directly answer आ जाएगा. Ratio of these two triangles, इसका और बड़े वाले triangles. Okay. Next question is from the construction. Okay, I'll draw the rough diagram for construction. This is the most scoring topic, I can say. Easily you will get the answers. Score कर सकते हो. So first draw the rough diagram and then make the actual construction. Okay. So they are saying one triangle is there. We need to construct this triangle ABC. ABC and AB is 6 centimeter. AB given as 6 centimeter. AC is given as 4.5 centimeter. Okay, and angle BAC. Okay, so they are saying, so I will take this as base. So instead of taking this, I will take A here, B here, and C here. So AB is given as 6 centimeter. AC is given as 4.5 centimeter, and this angle is given as 120. So first part is to construct the triangle. So take 6 centimeter AB. Okay. Make 120 degree. Just take an arc. Make an arc from here with the same length. Arc cut towards, and this will represent 60 degree plus 60 degree 120 degree. Now make an arc of 4 point cut and arc of 4.5. So this will become C. So this is our required triangle ABC. Okay. Now they are saying construct a circle circumscribing the triangle ABC. Circumscribing means they are asking for circumcircle. As in MCQ, I told key the circumcircle is formed by the intersection point of the perpendicular bisector of any two sides. If we take half of the more than half and more than half here, so this will be the perpendicular bisector for AB and same for the
AC also, you'll get the center. Center means circumcenter. Now take any vertex and draw the circle, you'll get the circumcircle. Take distance from any vertex. You just join this from any vertex and take this as radius, and this point O is as center. You can make the circumcircle. Got it? Any doubt? Now they are saying measure and write down the length of the radius. You need to just measure this OC by scale and you get the answers. Clear? Okay. Again, same question from the matrices. Just keep in mind the sum or subtraction of matrices is only possible when the order of the matrix are same. Okay. If we multiply any scalar number like 5 in B matrix, so each element will be multiplied by 5. Okay. Now comes to question number 3rd. So this is the question from the you can say mixed question actually, equation of line, midpoint formula, section formula like that, and you can say coordinate geometry also. So first, this was easy question. They are asking, actually, I'll read the question. They are asking, write down the coordinate of A, B, C, D. Okay, it's easy. The coordinate of A is 3, 3. Coordinate of B is lies on the y-axis, so its x coordinate 0, 0, -2, and the coordinate of C will be -4, -2, and coordinate of D will be equals to -1, 3. So these are the 4 coordinates of A, B, C, D. Next, in the next question, subpart, they are saying calculate the coordinate of P, the intersection point. Find the point of intersection of diagonal AC and BD. They are asking for the intersection point of this coordinate. Either read the question, read the coordinate and write, or you can easily get by the midpoint formula also. Since this is a parallelogram, it is given in the question. The first line they are mentioned, ABCD is a parallelogram. So we know the diagonals of the parallelogram are bisect each other. So we have the coordinate of C as -4, -2, and coordinate of A is 3, 3. Or you can directly read from the graph also. So x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So this will be -4 plus 3. Why they are saying calculate? Because exactly you are not getting the exact point on the graph. Maybe some deviation is there. So you can get calculate by midpoint formula. So -4 plus 3, which is -1/2, -2 plus 3 is 1/2. So -1/2, 1/2. ऐसे easily diagram से दिख रहा है. So you can get from the diagram. It's up to you whether you want the midpoint formula or from the graph. If you are comfortable in finding from the graph, you can directly write it. Okay, so you'll get the full marks from that also. Clear? In the third, they are saying find the slope of BC. They are asking for the slope of this line and DA. So as these lines are parallel to the x-axis, see, this is the x-axis. So slope of x-axis is equals to the slope of BC, even slope of AC. They are parallel lines. So slope of x-axis is 0, tan 0 is 0. So slope of MB and slope of DA is also 0. Okay. Now in the last question, they are asking find the equation of the diagonal AC. So we have this point, we have this point, we have this point. So we have 3 points. We can easily take any 2 points and we get the equation by applying the 2-point formula, which is y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1. Okay, so this is the formula for last part, equation of line. So they mix the questions from the various chapters. Next comes to the section B.
Okay, I want to clear one thing that some student says ki someone saying ki this chapter comes in option, this chapter comes in the compulsion portion. There is no set rule of ICSE ki this chapter will comes in section A, this chapter will come section B. There is no set rule. It's depend on the paper setter किसको किस chapter के अंदर कहाँ पे डालता है. Okay, so don't make like that कि preparation करेंगे ये chapter option में आएगा तो we can skip this chapter. No, don't go with that. Okay, so prepare. You have time. You can prepare for every chapter. ठीक है, all 25 chapters. So question number 4 का first part I'm skipping and I'll do question number 2. Fourth का second part. Okay. A tip for the linear equations: whenever you are multiplying by a negative number or divide by a negative number, keep in mind, don't forget to change the direction of the inequality. Okay. The first term of an AP is, so AP first term means that means A value is given as 5, and the last term L, or you can say AN, also you can say AN is given as, not AN, use TN, is given as 50. Their sum is 440. Their sum is 4. That means SN is given as 440. Just asking for the number of terms. That means you need to find the value of N and the common difference D. Okay, so A is given as. So if Sn is given as, so you can write Sn formula in terms of last term. So Sn is nothing but n by 2 A plus L. This formula mein you no need to find the value of D first. You can directly value N. So Sn is 440 is equals to N. We need to find A is given as 5, L is given as 50. So we get N value from here. So N will be equals to, yeah, I'm going to pass 880 upon 55. Okay, so from this you will get the value of number of terms there. So be a natural number. Then you have N value, you have L value. L means Tn, A plus N minus 1 into D is equals to 50. You have N, you have A, you will get the value of D. I'm not doing the calculations, you can easily get the answers. Any doubt? You can discuss if you want. Now comes to trigonometry. Okay. For trigonometry chapters, you need to revise the, you can say, 9th class identities. You should know the identities: A cube plus B cube, A cube minus B cube. So this is nothing but A plus B times A square plus B square minus AB. And for A cube minus B cube, A minus B, A square plus B square plus AB. Only one negative sign comes in both the formula, either here or here. Okay, so do this question. We need to prove that cot A plus tan A minus 1. I'll take LHS. Cot A plus tan A minus 1 and sin A plus cos A upon sin cube A plus cos A. Okay? Always keep in mind what you need to prove. That will give the direction of the questions कि क्या करना है. Otherwise randomly आप करते रहोगे. So keep in mind, actually sec x into cos x, or I can say 1 by cos x into sin x. We need to prove this. Okay. So first we convert into sin and cos. Cot I can write it cos by sin, so cos A by sin A. Tan is nothing but sin A by cos A minus 1 as it is. Okay, I'll take the LCM upon sin cube A plus cos cube A. Okay? Or you can see this is nothing but A cube plus B cube. We'll get A plus B, that means sin x plus cos x. That will cancel out from here. Or okay, so if you want, you can open this
A cube plus B cube is nothing but A plus B sin A plus cos A, and A square sin square A plus cos square A minus AB. AB is sin A into cos A, sin A into cos of A. Okay, now take the LCM here. So it will be sin A into cos of A. This will cancel out. So we will get cos square A plus sin square A minus sin A into cos of A into this is 1 upon, I'm writing here a separate form, sin square A. If you want to put the sin square A, cos square A 1, or keep it as it is. So you see this will cancel out from this. You'll get answer as 1 by sin A, 1 by sin A, and this is your actually RHS. So 1 by sin A is nothing but cos sec of A, and 1 by cos A is sec of A. So this is the term we need to prove that. Got it? Okay, so this is how I attempted this question. So we need to prove that 1 upon cos into sin A. So I convert the cot and tan into sin and cos, and simply take the LCM and open the identity A cube plus B cube. This is very important identity. Okay? Got it? Any doubt? Okay, so we'll do question number 5. So we can expect one questions of this type, sure and certain questions from the component and dividend using the property of proportion. So using a property of proportion, find the value of 6x. So 6x square plus 3x minus 5 upon 3x minus 5, which equals to 9x square plus 2x plus 5 upon 2x plus 5. Okay? X is not equals to 0. That means they are defining the question that x cannot be possible as 0. Okay, so we know A by B is equals to C by D. If we apply component and dividend, A plus B upon A minus B, that is equals to C plus D upon C minus D. Most common mistake done by the student is they write it as B minus A. Don't write it. Sequence will be same, A minus B, numerator minus denominator. Okay, numerator plus denominator divided by numerator denominator minus numerator minus denominator. Okay, so A plus B here. So just change the sign. Instead of plus, you need to put the minus. So this minus this. So I cannot apply C and D, component to dividend to 6x square plus 3x minus 5 plus 3x minus 5 upon 6x square plus 3x minus 5 minus 3x minus 5. Same for this also. Okay. We cannot apply component to dividend on the one side itself. No. We need to apply on the both sides at a time. Okay, so 9x square plus 2x plus 5 plus 2x plus 5 upon 9x square plus 2x plus 5 and minus 2x plus 5. Now open the brackets. So 6x square plus 3x minus 5 plus 3x minus 5 upon 6x square plus 3x minus 5 minus 3x plus 5. So the 9x square plus 2x plus 5 plus 2x plus 5 upon 9x square plus 2x plus 5 minus 2x minus 5. Okay, so cancel out 6x square, okay. 3x cancel, 5 cancel. Also 2x cancel, 5 and 5 cancel. So we get 6x square plus 3 plus 3 6x and minus 10 upon 6x square. Here also we'll get 9x square plus 4x plus 10 upon 9x square. So x square will cancel out. 0 we can 3 2 ja 6, 3 3 ja 9,
will cross multiply, or you can take 2 as common from here. So you get 2 as common, 3x square plus 2x minus 5. Okay, so 3, this will be 3. 3x square plus 3x minus 5 upon 2, and this will be 9x square plus 4x plus 10 upon 3. So 2 will cancel out. I will cross multiply. 3 3 is 9x square plus 9x minus 15 equals to 9x square plus 4x plus 10. So it will cancel out. 9x minus 4x is nothing but your 5x, and 15 plus 10 is 25. So x value will get as 5. So answer is x equals to 5. Okay? Clear? Any doubt? Okay, so this is the question number. Flip the first part. Now comes to second part. Question is from factor and remainder theorem. They are saying we have one polynomial, let's say f of x, which is equals to 2x cube minus 7x square plus kx minus 2. And it is given that x minus 2 is a factor. X minus 2 is a factor, that means x minus 2 equals to 0, you will get x value as 2. If you put in this, so this should be equals to 0. So f of 2, which will be 2 into 2 cube minus 7 into 2 square plus k into 2 minus 2 should be equals to 0 हो जाएगा. ठीक है? तो 16 minus 28 plus 2k minus 2 equals to 0. So you get 16 minus 2 is 14. Okay, so minus 14 plus 2k equals to 0. So k value will be equals to 7. You get the k as 7. Now, to put the value of k here, so get f of x is 2x cube minus 7x square plus 7x minus 2. Now they are saying you factorize the resultant polynomial completely. So we already have one factor, right? So no need to do that hit and try method. You directly divide this polynomial by the x minus 2. So 2x cube minus 7x square plus 7x minus 2. And we'll do the long division, x minus 2. So we have first term as 2x cube. We knew 2x cube. We have only x, so we need to multiply by 2x square. So multiply it in both the terms. 2x cube minus 4x square. Okay? Now subtract, minus plus, this will cancel out. 7 minus 4 is 3 minus 3x square plus 7x minus 2. Again, I want minus 3x square, we have only x, so minus 3x हो जाएगा. So minus 3x square plus 6x. Subtract, cancel, we'll get x minus 2 plus 1, x minus 2 cancel, 0. So get this polynomial f of x as x minus 2, and this is 2x square minus 3x plus 6. Now, splitting the middle term, you will get the two terms from here. You can easily find the terms. Actually, I am not doing that. Next, come to cylinder. So, if cylinder cone, mensuration part. A solid wooden capsule is shown in figure 1. So, we have two figures. In one, we have a solid with hemisphere and cylinder, and second we have three parts, two hemisphere and one cylinder. So solid wooden capsule shown in figure. Capsule is formed of a cylindrical block and two hemispheres. So we have this as one cylinder and two hemispheres. Okay. So find the sum of the total surface area of the three parts and shown in figure 2. So we have this solid cylinder
This is very easy, just calculate it. So I'll give you one tip to solve these types of questions. Radius is 3.5 and the height is 14 centimeter. So they are asking for find the sum of total surface area of three parts given that given radius of capsule is 3.5 centimeter, length is, okay, we need to use pi equals to 22/7. So they are asking for total surface area of all these three. So surface area of this cylinder will be equals to 2 pi RH plus 2 pi r square, or you can take 2 pi rs common, plus radius is same, so I'll take the same notations for here also. So this is the solid hemisphere. So surface area is 3 pi r square. So 3 pi r square, 3 pi r square, I can directly write 6 pi r square. Got it? So 6 pi r square, 2 pi r square is 8 pi r square. So 2 pi rh plus 8 pi r square. Okay. So one suggestion, student क्या करते हैं? They will calculate this value individually, this value individually, sorry, separately, and this value separately, and they at the last they will add up. So you see, you are multiplying pi, that means 22/7 in here also, again here also, so instead of multiplying each times, better to do the calculation at the last. Don't do any calculation in between the question if specifically they are not going to ask anything. If they ask you find this surface area for this part, then only find the surface area. Otherwise, do the calculation at the last. You see, I didn't do anything for this. I directly write 6 pi r square and adding this into 2 pi r square. Now this will become 8 pi square. Otherwise, you will do the calculation for pi here and the same calculation from here and do the addition. Instead of taking, I directly take this at 8 pi r square. Now again, I'm not going to do the calculation. I'll take the common part. So I'll get 2 pi rs common. So I'll get h plus 4r. Now I'll put the values. So 2 into 22/7. R is nothing but 3.5 means 35/10. Now so 7/2. So this will be 7/2. H is given as 14 plus 4 into 7/2. Now 2 will cancel out. So get 7 cancel, 2 cancel, 22. 14 plus 14, which is equals to 22 into 20. Easily you'll get the answer. Okay. So avoid calculation in between the questions. Do the calculation at the last after taking the common part. Okay. You will get the answer easily in this chapters. Okay. Otherwise, you will commit some mistakes and that will reflect in your answers. Okay, so simple suggestion, do the calculation at the last. Okay, so I'm not going to do this question. This is question from the reflection. Easily, if we are reflecting with respect to x, then the coordinate of y will change its sign. If we are reflecting with respect to y, change of x sign. Okay, origin के respect में दोनों. Next is this is question from height and distance. Okay. So a diagram is already given in the question paper. So draw the diagram. So this angle is given as 35 degree, this is given as 14 degree, okay, and these three lines are parallel, all four lines are parallel actually, this A, B, D, P, E and C, okay. I will read the question. They are saying, in the given diagram, AB is a vertical tower, okay, 100 meter away from the foot of a 30-story building. Okay, so 100 meter away means this value is given as 100 meter. The angle of depression from point C and E. Okay,
E being the midpoint of CD. Okay, E is being the midpoint of CD. That means ये value और ये value equal है. ठीक है? E being the midpoint of CD. 35 and 14 degree. Okay. Round up to 2 calculate. Okay, find the height of the tower A. We need to find this value. So if this is 35, so can I say this is also 35 degree? Alternating the diameter. If this is 14 degree, so this is also 14 degree. Okay, so if this is 100, so this is also 100. So always establish a relation. We need to find this value and this value. So we'll take tan theta. Okay. So I can take as tan theta. So tan of 14 degree is nothing but EP upon 100. Right? So you get EP value as okay. Tan 14 we can use from the table and multiply by 100. Okay. So we have this value. Now comes to second triangle. Okay. So you get as tan of 35 is equals to CP upon 100. So from here you will get the value of CP, which is equals to 100 times of tan 35. Here also you get as 100 into tan of 14. So these two values you will get. A value or complete value, which is this value. So can I get this value? So this CP will be equals to CP minus EP. If we subtract these two values, we'll get the value of this thing. And this is nothing but C is equals to ED. So we are getting the ED value. For example, I'm getting this as let's say this value is 30 and this value is given as let's say 60 or 50. Total. This value is 50. So this is nothing but 20 okay, so this is 20. Okay, so if this is 20, so this is also 20. I'm taking just as a rough value because since they are equal. So this value will get as this value, so I'll get this value. This and these are equal, so I'll get this value. तो अगर ये value होगी, ये already है मेरे पास. I'll already find the EP value. I'll subtract this. I'll get the value of PD, and PD is nothing but your EP. Simple calculation part. Okay. Then CD part. So CD already got the value of CD. CP plus PD. PD already find, CP already get. Add this PD value, we'll get the value of CD building together. Okay. Now comes to they are saying draw a histogram for the following distribution which makes the marks obtained by. So histogram mode. If we find the value of mode, we need to draw the histogram. This is the scoring one. You'll easily get the 3 marks. So I'm just roughly drawing one, let's say, histogram. So you need to see the highest height wala rectangle and join this opposite vertex from this and the intersection point of these two. Draw on the x-axis and this value represents the mode. Clear? And the highest frequency class interval is the model class. It's called as the model class. So they are asking for mode only. So this will be the value. Okay. So this is again the question from the equation of line. Okay, so we'll discuss this question. They're saying in the graph P and Q are the points such that PQ cuts cut off intercept of 5 units and 3 units along the x-axis and y-axis. So it is given in the question. Okay, we draw the diagram. So this is your y-axis, this is your x-axis. One intercept, 5 intercept is given. This is 3 intercept. So coordinate of will be 5, 0. And here negative है, so this will be 0,
minus 3 the coordinate of Q and the coordinate of P. Now they are saying a line which is perpendicular to PQ and passing through the origin. So again origin matlab y equals to mx, है ना? C will be 0 for this line. So they are asking for coordinate of P and Q. P will be 5, 0. Q will be 0, minus 3. Now equation of RS, that means this line, we need to find the. So if they are perpendicular, the multiplication of slope will be minus 1. So we have P and Q. We can get the slope of PQ. है ना? So PQ is nothing but slope formula. We have y2 minus y1 upon x2 minus x1. So slope of PQ will be equals to y2 minus y1, so 0 minus 3, minus of minus 3 upon 5 minus 0. So this will be 3 upon 5 m of PQ. Got it? Now they are saying, let's say perpendicular slope is m of RS. So these, since they are perpendicular, so m of RS into m of PQ should be equals to minus 1. The slope of RS is equals to 3 by 5, which is equals to minus 1. The slope of RS will be equals to minus 5 by 3. Now I can put the value here. So will be y equals to m is minus 5 by 3x. So you can cross multiply 3y equals to minus 5x. So 5x plus 3y equals to 0. You get the answer as. Okay, so this is the answer for this question. Again GST. Just keep in mind discount है तो subtract that है ना, तो वो subtract करना है, बाकी simple calculations है. Okay, we'll do question number 8 का first part. A man bought 200 shares of a company at 20% premium. Premium means above par की बात करें, they are talking about the above par. Market value is more than the nominal value by 25%. So it is given as nominal value is given as 200 rupees. Okay. So market value will be equals to nominal value, premium plus 200 ka 25%. Okay. So it will be 200 plus 50. The market value is given as 250 rupees. If he receive a return of 5% on his investment, ठीक है? तो investment पे 5%, तो investment is 250 rupees का purchase किया, है ना? तो 5% of 250, 25 by 2 rupees का profit हुआ उसका, ठीक है? Okay, so first question is market value. So market value is 250. Dividend percentage declared. So this is nothing but dividend, only income. So income, how will get? We find this income with respect to investment percentage. This also I can calculate from the dividend also. So this is nothing but nominal value, which is 200 ka R%. We need to calculate dividend D%. Got it? In the same MCQ, I find both the values, income from the investment and also income from the dividend, and equate both the values. Same thing I am doing here also. I calculate the income on the investment. Investment is 250 rupees. Out of that we are getting 5%. So that will be 25 by 2. Here also 200 ka D%. Okay. So do the calculation. D will be equals to 25 into 100 upon 2 into 200. Okay. So this will be 25 by 4%. In the third question, they will ask for number of, you can convert into decimal form, number of shares purchased if annual dividend is 1000 rupees. See, number of shares. They are saying not. Okay. It is given that 25 by 2. That means 12.5 rupees we are getting income from the one, or you can say annual dividend from the one share. And they are saying if we are getting 1000 rupees as income. So we can divide by the income, total income, divide by the income from the one share.
That means 12.5 will get the value of number of sales. Got it? Okay. So for next question, frequency distribution, you need to draw the Ujjayi curve. Ujjayi curve means cumulative frequency. You need to draw the cumulative frequency. Obviously, if you draw the cumulative frequency, curve is always increasing. Some option draw like this only. No, this is not the frequency polygon. Okay, you need to draw the Ujjayi curve which is increasing in nature. Okay, so some terms are there. One is lower quartile, upper quartile, quartile range, median. Okay, so let's say total number of data is n. So median will be equals to, depend on whether n is even or odd, n by 2th term. We'll do one question at the last also. So n by 2th term is the median, or if n is not an even number, then n plus 2 1 upon 2th term. Same for the lower quartile. Lower quartile means n by 4th term. Again, for even or odd, change formula will change. Upper quartile with 3n by 4th term. Actually, we are doing quartile means we are dividing the whole data into 4 equal parts. So 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4. We are equating the data. Let's say if data is 100, so 25, 25, 25, 25. We are dividing 4 parts. It will be n by 4. Again n by 4. So n by 4 plus n by 4, n by 2. That's why this median is n by 2. Again n by 2, n by 2, n by 2. So 3n by 4. Okay. This is n by 4, and this complete will be n. So this is called as, first part is called as where we are dividing the data, lower quartile. This is median, or this is your upper quartile. And the difference of upper quartile, this is written as Q1, Q3. So Q3 minus Q1 is represented by the quartile range. Okay. And next is the common question. Mostly, I think everyone practice the 3 to 4 times for this questions. I'll make the equation only. Form quadratic equation chapter for problems. So Mr. and Mrs. Das were traveling by car from Delhi to Kasauli for a holiday. The distance between, so this distance is given as 350 km, Delhi to Kasauli. Due to heavy rain, let's say the normal speed was x km per hour, and they are taking t1 time for the whole journey, t1 hours for the whole journey. Now due to wet weather, due to heavy rain, they had to slow down. The average speed of the car reduced by 20 km, reduced by, not 2. So x minus 20 will be the new speed. Obviously that they will take more time, that's a t2 time. So they are saying if t2 minus t1 is given as 2 hours. The time of journey increased by 2 hours. Keep in mind, most of the question they have given in 2 hours, but in general they will give that 2 hours in 30 minutes, 45 minutes, like that. So you need to convert this into hours. Keep in mind, okay? Otherwise, you will not get the correct answer. Since we are taking this 20, they are giving 20 as 20 km per hour. So you need to take this time into hours only. So you need to convert that to into hours if it is not given in hours. So time is nothing but your distance upon speed. So 350 upon speed is x minus 20 minus 350 upon x is equals to. Okay. The common mistakes done by student, they will do t1 minus t2. Use your common sense. Obviously, if we decrease the speed, the time will get increased for the same distance. Okay, so that's why t2 minus t1 only give the positive value. Otherwise, t1 minus 2 will get the negative answer. How it can be negative? Difference of time negative. Okay, clear? If you get the speed from this, now they are saying with reduced speed, the number of hours they took to reach the destination. So we have speed, new speed. Okay, so we need to find the value of time. So t2 is nothing but, as I have written, 350 upon
x minus 20. We already get the value of x from here. Put the value and you get the answer as the reduced time. Got it? So this is again the same question. Convert. They are convert. Thus keep in mind they have given the hollow sphere. Hollow sphere means the area, the volume will be equals to 4 by 3 pi capital R cube minus small r cube. So this is the volume and this will convert into cone. So volume of cone 1 by 3 pi, let's say r dash square h. Equate this, you will get the value of radius of the cone. Okay, so this will be the last question for the session. Okay, so this question from the probability. So we know probability is nothing but number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Okay, so Susmita went to a fair and participated in a game. The game consisted of a box having a numbered card and a number card from 1 to 30. So how many total cards? 30 cards are there. 3 prizes were given. The wall clock diya hai, perfect square. So we have 1 is the perfect square, 2 ka square is 4, 9, okay, 4 square is 16, 5 square is 25. Okay, now 6 square 36, that crosses the number card. Okay, so only 5 are there. So probability will be 5 by 30. 1 by 6 is the probability to get a perfect square number. Got it? Next, even number which is a multiple of 3. So even number you can write even number or a multiple of 3 and take the common value, or you can directly say if a number is even and it should be also a multiple of 3. So that means even means multiple of 2 and multiple of 3 also. So multiple of 6 should be there. So 6, 12, 18, 24 and 30. Okay? So again 5 by 30, there is also 1 by 6 square. And a prime number, okay, keep in mind 1 is not a prime number, so it should be 2, 3, 5, 7, 9, not 9, 11, 13, 17, 23 and 29. Okay? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9. I skipped the 19. 19 is also a prime number. 19, 23 and 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It should be 10 upon 30. Answer should be is 1 by 3. Clear? Any doubt? Okay, we'll do this question also. Okay. Circle question. So this given at 32. And these two sides are equal. This is O, this is Z, this is Y. This angle is given as 66 degree. Okay. O, X, B, and A. So first we need to find the value of angle BOX. BOX. This angle we want. Okay, so we can easily find this as nothing but we know the tangent at the point of contact is perpendicular to the radius. So this angle will be 90 degree. So this is 90 degree. This is 32. You can easily get the this value by angle sum property of triangle Z. Got it? So this is nothing but a 58 degree. Now CYX. Where is C? Okay. This is C. CYX. We need to find this value. Okay, so you have one theorem. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended on the remaining part of the circumference. C. This XC. XC is subtending 50 degree at the center. Okay, and this is also subtending this angle on the circumference. So this will be the half of this. So this will be 29 degrees. Got it? Any doubt? Now comes to angle ZYX. ZYX, this angle I want. Okay?
So you studied one theorem, that is alternate segment theorem. The angle between the chords, है ना, and tangent is equals to the angle subtended by the same chord on the alternate segment. This is theta, so this is also theta. See, this is 60 degree angle between chord and tangent, and this chord is making an angle of y here, so this should also be 60 degree by the alternate segment theorem. Last, OXY, this angle we want, this angle. Okay, so you can easily find these two sides are equal, है ना? So these two sides are equal, so we can say opposite to this, let's say this is theta, so this also be theta, and this angle is given as 66. So 2 theta plus 66 is equals to 180 degree. You will get the value of theta from here. Okay, so you will get the value of theta here, and this complete angle is 90 degree. This angle is 90 degree, or you can do by other method also. Actually, one question you can do by the different methods also. Right? Depend on this which method you strike in the exam. Okay, 66. Okay, yes. Theta, you will get as theta as this angle. You will get the value here. Now, this complete angle is also 90 degree. So you will get the value of this 90 minus 66, 24 degree. Okay. Now this theta minus 24, you will get the answer of this question, OXY. Clear? Okay, so with this we are completing our session. This is the question that I was talking about. You can try this question. Okay. So this was the questions paper of 2025 last year. Yes, Siva. Sir, can you tell us how much time we should spend on each question or section? Okay, yeah, this is the common question. I think in CBSE also they ask the same question at the last. Actually, beta, frankly speaking, don't set the fixed time for the sections. It depends on the level of the question. You know? What I suggest to student is, if you said ki I will do this section MCQ in 20 minutes, and if that questions come, or you can say the questions are little bit lengthy, you will get frustrated. Okay, so what you do, don't fix the time. Minimum time you use that for the MCQs. Okay, क्योंकि वहां पे हमें क्या लिखना है, just dictate करना है, just answer. So what I suggest to student, in one paper don't use the calculation in between the answers, otherwise the examiner will get confused. So write 1, 2, 3 like that, 15, है ना, and write the answers. ठीक है, let's say मैंने 10 क्वेश्चन किए, 5 skip रहने दो उसको, है ना. Don't write calculation in between these. वो directly check करेगा and get the आपको total दे देगा. क्या करो, आपको इसको छोड़ के रखो. अगर आपको लगता है 20 मिनट्स मैंने सेट किए तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप छोड़ के रखो, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लास्ट में आके करो. ठीक है, लेकिन आप फिक्स कर रहे हैं 20 में मुझे 15 के 15 को पता पड़ा कि एक भी हो ही नहीं रहे, है ना, तो you'll get a frustration, है ना, डिमोटिवेट हो जाओगे. ट्राई करो कि नहीं, मिनिमम हाफ एन आवर में तो करना ही करना है मुझे कैसे भी करके, लेकिन अगर नहीं होते तो मैं छोड़ के बाद में आ गया, मे भी आगे का पेपर इजी हो, वहां टाइम कम लगे, यहाँ पे. ठीक है, तो मैं ऐसा सेट नहीं करता हूँ, इसलिए हमारे वो मॉक टेस्ट जो बता रहे थे सर, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. या कि आप जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एक आइडिया मिलेगी कि नहीं, कभी कभी मेरे एमसीक्यू 20 मिनट्स में भी हो जा रहे, कभी कभी 40 मिनट्स भी लग रहे, लेकिन जब 40 मिनट्स लग रहे तो आगे का पेपर मेरे बहुत इजीली है, बहुत जल्दी हो जा रहा है. तो इससे आपको एक पैटर्न मिलेगा कि नहीं, मुझे कोई चीज फिक्स करके नहीं चली, मुझे मिनिमम टाइम लेना है जितना हो सकता है. अगर आपने बोला कि नहीं मुझे 30 मिनट्स लेने थे लेकिन ज्यादा लगे, कोई बात नहीं, आप वहां पे इसको होल्ड कर दो, बाकी के क्वेश्चंस करो. अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एमसीक्यू लास्ट में करते हैं और वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो आई कैन नॉट से कि मैं सजेस्ट करूंगी एमसीक्यू बाद में करना चाहिए, पहले करना. आप प्रैक्टिस करो, आप 4 मॉक टेस्ट 5 जो भी ट्राई करो, उसमें से डिसीजन लो कि आपके डिस्क्रिप्टिव जल्दी होते हैं कि वो करना है, बाकी तो क्या होगा, पेपर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो अगर ऐसा बना के जाओगे, एक मूड बना के जाओगे और वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ, तो आपके पूरे पेपर को क्या कर देगा, वो बर्बाद कर देगा.
ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट, डोंट मेक एनी स्टैंडर्ड कि नहीं मुझे इतने क्वेश्चन करने, इतने मिनट में करने, ठीक है, जो मिनिमम पॉसिबिलिटीज होगी मैं उस पर वर्क करूंगा। गॉट इट? Okay, sir. एनी अदर डाउट? बाकी लिंक पे आपको मिल जाएगी, तो आपको फ्री टेस्ट मिलेगा वहां पे, है ना। और वन मोर थिंग, आप लोगों को ये जो रिकॉर्डिंग आज की और पेपर, है ना, इफ यू फिल दैट फॉर्म यू विल गेट योर डिटेल्स, तो विल शेयर दैट रिकॉर्डिंग एंड वो पेपर क्वेश्चन, है ना, इन आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली टुमारो विल शेयर दैट डिटेल्स। ओके, Sir, for the क्लियर? mock, sir, for mock test also, you will send details, no? यस यस यस, By tomorrow? yeah, by tomorrow, or most probably by tomorrow. Okay, if you fill that form, you link में fill कर दो form, and most probably you will get the update soon. Okay, thank you. Okay, so link is in the chat box, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म होगी तो chat box से मीटिंग वो चली जाएगी ना, तो बेटर कि अभी उसको कॉपी करके रख लो, है ना, और फिल कर दो। Okay, so wish you all the best, thank you so much. Okay, so I'm ending the meeting. Thank you, sir. Thank you, all the best. Thank you, sir. Okay, okay, thank you. नीलेश सर एंड करें मीटिंग?